Konnichiwa minasan. So here is a small Hiragana test for beginners for JLPT N5 जो कि तुम लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे. So let's go. So there will be two rules. First is जब भी तुम्हारा कोई सा भी करेक्ट आंसर होगा तब तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा, और अगर तुम्हारा करेक्ट आंसर नहीं है, तुम्हारा गलत है, देन 0. ओके. एंड सेकंड रूल इज कि तुम्हें हर क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड्स दिए जाएंगे. अगर तुम्हें और क्वेश्चन और टाइम चाहिए देन तुम वीडियो को पॉज कर सकते हो. ओके. सो लेट्स बिगिन द टेस्ट. तो अब ये करेक्टर कौन सा हिरागाना करेक्टर है बताओ मुझे. सो दिस करेक्टर इज आ एंड साथ ही साथ तुम्हें आंसर देते हुए अपने पॉइंट्स को नोट डाउन भी करना है, एंड तुम्हें प्रोनाउंसिएशन भी देखनी है कि तुम ठीक से कर रहे हो या नहीं. दिस इज नॉट ए, इट इज आ. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस करेक्टर को रीड करो और मेरे को बताओ कि ये कौन सा करेक्टर है. ओके. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज नु. Okay, now next. Now tell me about this character. Okay, so this character is me. Okay, so hopefully तुम्हारे अभी तक तीनों के तीनों करेक्ट रहे होंगे. Now next. Now tell me about this character. Okay, so this is wa. Okay, now tell me about this character. This is me. Okay, so now let's increase the difficulty, and now this character. It's written suma, which means wife. Okay, now next. Okay, so now this word. It's written hito. Now this word. It's written yuki. Okay, so now this word. It's written as kasa, which means an umbrella. Okay, now let's go to the last question, and it's gonna be difficult. Okay, so now this word. Benkyo. Okay, it's written benkyo, which means to study. Okay, so hopefully जिन लोगों का ये तक सही हो गया है then really good, and जिन लोगों के 10 points बने हैं they are doing really excellent, and जिन लोगों के 10 से नीचे बने हैं they need practice, and don't worry, समय के साथ साथ हो जाएगा. and अगर इस टेस्ट में 7 से ऊपर भी आए हैं then you are doing really good. Okay, so keep it up, and इसका अगर तुम चाहते हो कि मैं पार्ट 2 बनाऊं एंड विद अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्टी, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड अपने पॉइंट्स भी बताना कि तुम कितने पॉइंट्स स्कोर कर पाए हो. सो नाउ लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो मिलते तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाने.